हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स एंड न्यूज़। सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस द न्यूज़ इन डिटेल। जो पहली न्यूज़ हम कवर करेंगे वो है अबाउट द ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, जहां पर हमें एक मॉडेस्ट राइज देखने को मिला इन द अर्ली एशियन ट्रेड आफ्टर ओपीईसी डिसाइडेड टू पॉज द प्रोडक्शन हाइक्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026। और ये मूव आया है एज द ग्रुप aim to prevent a supply glut that has been weighing on prices in recent months। तो इससे हमने देखा कि जो ब्रेंट क्रूड है उसका प्राइस वो स्टैंडिंग एट $64.77 पर बैरल एंड डब्ल्यूटीआई क्रूड का $60.95 पर बैरल। और दोनों ही बेंचमार्क्स एक्सटेंडेड फ्राइडेज मॉडेस्ट गेन सपोर्टेड बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ टाइटर सप्लाई कंडीशंस इन अर्ली 2026। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है ओपीईसी प्लस, उसने अनाउंस किया संडे को कि it would raise output by 1,37,000 barrels per day in December 2025, maintaining the same pace as October and November. However, citing seasonal demand weakness and risk of oversupply, group ने agree किया है to pause the production increases for January to March 2026. Now, beyond December, due to seasonality, 8 countries ने decide किया था to pause the production increments in January, February, and March 2026. So, OPEC Plus said in a statement. And the move underscores the cartel's cautious stance as it seeks to stabilize prices after months of volatility. मेनली ये सब हुआ है क्योंकि यूक्रेन का जो ड्रोन स्ट्राइक था ऑन रशिया स्टॉपेज पोर्ट एंड न्यू यूएस सैंक्शंस ऑन रशियन ऑयल, इसकी वजह से सप्लाई कंसर्न्स काफी ज्यादा हाइटन हो गए हैं, व्हाइल वीक एशियन पीएमआई एंड ट्रम्प टैरिफ्स डैम्पेंड द डिमांड आउटलुक। मीनवाइल एक रिकॉर्ड यूएस आउटपुट देखने को मिला एट 113.8 एमबीपीडी, एडेड प्रेशर ऑन ग्लोबल बैलेंसेस। ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई दोनों ही फेल करे हैं ओवर 2% इन अक्टूबर, and this is the third straight monthly decline as hitting 5-month lows on October 20 as supply growth and weak global demand weighted on sentiment. Now let's move to the next news. And this news is from the telecom space, जहाँ पर we are seeing some good news for investors in Vodafone Idea, जहाँ पर shares of Vodafone Idea have rallied 10% on Monday, hitting the upper circuit at rupees 9.6 after two major developments boosted the investor sentiment। अब ये दो मेजर डेवलपमेंट्स थी। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था एजीआर के बारे में, एजीआर ड्यू केस के बारे में, और दूसरा देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ अ पोटेंशियल 4 to 6 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट बाय टिलमैन ग्रुप होल्डिंग्स। तो वोडाफोन आइडिया का ये जो शार्प राइज था ये आया आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स का जो प्ली है कंसर्निंग द एडिशनल एजीआर ड्यूज एंड रीअसेसमेंट ऑफ द पेंडिंग लायबिलिटीज, उस पे कुछ क्लैरिफिकेशंस दी, और इसकी वजह से इन्वेस्टर की जो होप है फॉर अ पॉसिबल रिलीफ ये ज्यादा हो गई थी। However, uncertainty remains over whether the clarification applies to all the AGR liabilities or only to the additional demand. Adding to this positive momentum, और भी जो positive चीज हुई वो था US based private equity firm Tillman Global Holdings ने advanced discussions held किए to invest 4 to 6 billion dollars, that is around 35,000 to 52,000 crores in VI. According to Economic Times, TGH may ask operational control of the company as the part of the deal, while also submitting a restructuring proposal to the government to help VI manage its debt burden. अब ये जो इन्वेस्टमेंट है is contingent upon a comprehensive government package that addresses VI total liabilities including the AGR and the spectrum dues. And now let's come to the next news, which is about a major PSU making the headline, जहाँ पर we are seeing Dredging Corporation of India के shares around 20% तक बढ़े to hit the upper circuit at 889.35 after the company announced signing 22 strategic MoUs worth 17,645 crores। तो बेसिकली इसमें कुछ एमओयू साइन हुए हैं जिसमें डीसीआईएल एंटर किया है 22 एमओयूज में विद 16 ऑर्गेनाइजेशन, जिससे उसकी ऑर्डर विजिबिलिटी बढ़ी है और पार्टनरशिप स्ट्रेंथन हुई है। तो सबसे पहले तो प्रमोटर पोर्ट्स के साथ था, फिर कोचिन शिपयार्ड, एनएमडीसी, अबू धाबी, बीईएमएल, आईएचसी, इन सबके साथ कुछ ना कुछ एमओयू हुआ है। एडिंग टू दिस मोमेंटम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फॉर द मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ डीसीआईएल, और ये फंडिंग सपोर्ट करेगा कंपनी को इन एक्वायरिंग 11 न्यू ड्रेजर्स, ऑटोमेशन इनिशिएटिव and skill development programs aimed at enhancing operational capability and fleet efficiency.
मैनेजमेंट कमेंट्री का देखें तो जो चेयरमैन ने कंपनी का उन्होंने बोला है कि जो एमओयू है और पीएम की इन्वेस्टमेंट है, इट विल इनेबल द कंपनी टू स्ट्रेंथन द पोर्ट ऑपरेशन, इंडिजिनाइज फ्लीट स्पेयर्स एंड बिल्ड एडवांस ट्रेजर्स। एंड एमडी एंड सीईओ ने भी बोला है कि ये जो रोड मैप है ये हेल्प करेगा कंपनी को टू रीअफर्म द मार्केट लीडरशिप। अब ये जो एमओयू पाइपलाइन है अराउंड 17,500 करोड़ की, कंबाइंड विद स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बैकिंग, ये कंपनी के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल फेज हो सकता है। Now, from the corporate expansion, now let's see a major regulatory development which involves one of India's well-known industrial groups, जहाँ पर ED ने attach करे हैं assets worth around 3,000 crores, which are linked to Anil Ambani and his Reliance Group companies under the Prevention of Money Laundering Act. तो बेसिकली इसमें क्या हुआ है कि कुछ एसेट्स अटैच हुए हैं, जैसे अंबानी का पाली हिल रेसिडेंस इन मुंबई, रिलायंस सेंटर प्लॉट ऑन दिल्ली महाराजा रंजीत सिंह मार्ग एंड मल्टीपल रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज अक्रॉस वेरियस सिटीज इन इंडिया। अब ये जो प्रोब है, इट इज रिलेटेड टू एलिज डाइवर्जन एंड लॉन्ड्रिंग ऑफ पब्लिक फंड्स व्हिच आर रेज्ड बाय रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड एंड रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड 2017 से 2019 के बीच में। अब इसमें क्या है, यस बैंक ने इन्वेस्ट कर दिया है अराउंड 2,965 करोड़ इन आरएचएफएल एंड 2,045 करोड़ इन आरसीएफएल थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट्स। बाय दिसंबर 2019 ये नॉन परफॉर्मिंग हो गए विद ओवर 3,300 करोड़ स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो ईडी ने एलेज किया है दैट पार्ट ऑफ दीज फंड्स इट विल बी डाइवर्टेड थ्रू शेल कंपनीज एंड लॉन्डर्ड फॉर पर्सनल एंड रिलेटेड पार्टी यूज। जो करंट अटैचमेंट्स है, दे फॉर्म पार्ट ऑफ अ लार्जर इन्वेस्टिगेशन इनटू लोन डाइवर्जन एक्सीडिंग 17,000 करोड़ इन्वॉल्विंग अदर रिलायंस ग्रुप एंटिटीज सच एज रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। और ईडी का ये मूव दिखाता है एक मेजर एस्केलेशन in a long running investment into the Reliance ADAG Group's debt default and banking relationships. While Anil Ambani previously maintained that his firms are cooperating with authorities, the asset attachment signals deepening regulatory scrutiny. And finally, let's wrap up with some of the quarterly result updates. So सबसे पहले है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जिसके शेयर अराउंड 5% बढ़े पोस्ट रिजल्ट्स as brokerages maintained a bullish outlook on expectation of stronger H2 FY26 momentum and recovery in the margins. So let's see the financials, जहां पर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है 4% ईयर ऑन ईयर एंड इट इज सपोर्टेड बाय 3% अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ। EBITDA margin was at 19.3%, flat quarter on quarter and impacted by temporary GST transition cost. Net profit declined 2% year on year, excluding the exceptional items due to short-term trade disruption. Standalone business sales up to 4% year on year, UVG 3%. अफ्रीका, यूएस और मिडिल ईस्ट में देखा है कि एक स्टेलर 25% आईएनआर सेल्स ग्रोथ है एंड 20% EBITDA ग्रोथ। एंड इंडोनेशिया revenue declined 7%, though UVG remained positive at 2%. अगर हम मैनेजमेंट कमेंट्री पे देखें तो डिस्पाइट द जीएसटी ट्रांजिशन हेडविंड्स, इंडोनेशियन मैक्रो चैलेंजेस हैं, इंडिया एक्सोप डिलीवर्ड डबल डिजिट यूवीजी डेमोन्स्ट्रेटिंग ब्रांड रेजिलियंस। जीएसटी रेट रिडक्शन फ्रॉम 18% to 5% एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंज है अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। H2 FY26 कंपनी एक्सपेक्ट करिए कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा ड्यू टू मार्जिन रिकवरी टू नॉर्मेटिव लेवल्स एंड हाई सिंगल डिजिट यूवीजी एट कंसोलिडेटेड लेवल्स। इंडिया बिजनेस की बात करें तो वो 4% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है एंड मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करिए कि H2 FY26 में एक अच्छी सिक्वेंशियल ग्रोथ होगी ड्यू टू जीएसटी नॉर्मलाइजेशन, फेस्टिव डिमांड रिकवरी, मार्जिन इंप्रूवमेंट टू हिस्टोरिक लेवल, सस्टेन जीएयूएम मोमेंटम एंड ग्रेजुअल ईजिंग ऑफ इंडोनेशिया। एंड मैनेजमेंट ने गाइड किया है हाई सिंगल डिजिट यूवीजी आएगा स्टैंडअलोन बिजनेस में एंड डबल डिजिट EBITDA ग्रोथ इन इंडिया एंड जीएयूएम सेगमेंट्स। नाउ लेट्स सी द result of another company, another cement major, which is ACC Limited, part of Adani Group, जिसने एक strong performance register करी in Q2 FY26, posting 5 times surge in net profit and strong double-digit growth in revenue. तो मेनली कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, इट रोज 30% ईयर ऑन ईयर। ग्रोथ मेनली आई थी सस्टेन डिमांड की वजह से इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर एंड हायर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रीमियम सीमेंट प्रोडक्ट्स। एंड देन वी सॉ दैट 47% of the trade sales see with premium volumes rising 20% year on year। ACC का net profit jump किया है 5 times to 1,119 crores and strong bottom line growth देखने को भी मिली है, which was aided by lower tax expenses as the company reversed tax provisions worth 658.4 crores
following favorable high court rulings in the similar cases. Operating profitability की बात करें तो EBITDA rise किया है 90% year on year, EBITDA margins expanded by 456 basis points, and ACC credited its performance to its ongoing reimagination transformative drive, which focuses on operational efficiency, premium product production expansion, and digital integration. Now let's see the summary of all the news which we covered today. So first we started with global oil prices, which rose modestly after OPEC paused Q1 26 output hike. Vodafone Idea share surge करे हैं as AGR relief hopes and potential $4 to $6 billion Tillman investment. DCL के shares jump करे हैं 20% after signing multiple MoUs, and then we saw ED ने attach करे around 3,000 crores के assets of Anil Ambani and Godrej property consumers के results and ACC के results. So that's it for today's edition of this video. And if you found this video informative and helpful, do not forget to hit the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel for more crisp and insightful market updates. See you in the next one. Until then, keep learning and happy investing.